isolation, heat budget and albedo works. What is temperature and inversion of temperature? Pressure क्या होता है, यहाँ तक cover करेंगे. And in the next coming one, we'll discuss the other topics. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक काइंड ऑफ ब्लैंकेट है जो कि अर्थ ने ओढ़ के रखा है. सो इट्स द लेयर ऑफ द एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ. ये एक थिक गैशियस एनवेलप है जो सराउंड करता है अर्थ को फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड इज अटैच्ड टू द अर्थ फॉर बाय ग्रेविटी. So because of gravity, it is forming a blanket kind of structure over the earth. Weather क्या है? Weather is day-to-day state of atmosphere. कि on a day-to-day basis, how the atmosphere is reacting. That is weather. Next is climate. Climate क्या होता है? So climate is the average atmospheric conditions किसी भी area का of over a considerable period of time. So a considerable period of time के लिए. So it's the average atmospheric condition किसी भी area का of over a considerable period of time calculated for a minimum of 30 years. तो 30 years का जब हम पूरा average atmospheric conditions को study करते हैं and then we conclude as to how the climate of that area is. इसमें जैसे हम temperature, rainfall, winds, humidity, air pressure etc. ये सब का बात करते हैं. Composition जो हमारा atmosphere है उसमें क्या क्या composition है. So this sequence is important. The very first major component which is present in the atmosphere is nitrogen. Nitrogen is around 78%. फिर आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन is around 21%. argon is around 0.93. CO2 0.4%. neon, then helium, krypton, इसके बीच में मीथेन भी है, मीथेन, क्रिप्टन, xenon, हाइड्रोजन एंड लास्ट में रेडॉन. इसके साथ साथ we have some kind of water as well, water vapor which is H2O and dust particles which is present in the atmosphere. Now बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में. So एक एक gases का बात करेंगे कि how what the importance of each of the gases in the atmosphere is. पहला है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है. ये हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं बट इसको ऑयल में फिक्स किया जाता है जिससे ऑयल सॉइल जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है. केमिकली एक्टिव नहीं है, कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है एज दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स और इवन फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन increase हुआ है in the atmosphere because of the photosynthesis process which was there happening beneath the oceans. Now, हर एक living organism requires O2 for the purpose of glucose breakdown. This is chemically active. Next comes CO2. CO2 का proportion in the today's atmosphere is around 0.4%. Now that is released by every living organism during the respiration process. Plants absorb करते हैं CO2 during photosynthesis and highest is the proportion of CO2 in the last 8 lakh years. कुछ noble gases हैं जो react नहीं करते हो atmosphere में but present हैं जैसे कि others जितने भी थे neon, helium, krypton, xenon, hydrogen. तो ये सब react नहीं करते atmosphere में. Next comes H2O and dust particles. H2O is the water vapor. It is also a greenhouse gas which is capable of absorbing the heat. 90% of the H2O जो है present in the lowest 16 kilometer of atmosphere. Plus weather phenomena जो है वो भी depend करता है H2O के ऊपर because most of the important activities of the atmosphere is performed in the presence of H2O, which are evaporation, condensation, and cyclones, etc. There are many more. Now, dust particles क्या होते हैं? Dust particles का major है that they are responsible for formation of clouds. Now, dust particles बहुत ही minute solid particles हैं जो कि air में suspended रहते हैं. It is important for cloud formation. Weather phenomena इस पर depend करता है. प्रपोर्शन वेरी करता है एज पर दी स्पेस एंड टाइम. डेजर्ट रीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमको. ड्राई क्लाइमेट होता है बिफोर रेनफॉल
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एरिड या वोल्केनिक रीजन्स में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया है, मतलब दे हैव द कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब वाटर एज वेल, दैट्स हाउ दे फॉर्म क्लाउड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ओजोन। ओजोन एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है जो कि O3 है फॉर्म। Now there are two kinds of ozone. एक good ozone है which is protecting Earth's atmosphere from the UV rays. So it is the second layer of Earth's atmosphere, that is stratosphere. And इसमें 90% of the ozone present है, मतलब पूरा proportion है, 90% of the ozone हम stratosphere में देखते हैं, which helps us in filtering the UV rays. And then कुछ bad ozone है जो कि 10% in around troposphere में present है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, that is it is absorbing the heat and creating smog kind of features. Next, the structure of atmosphere. Structure of atmosphere में earth के around there is two kinds of sphere. One is homosphere, the second one is heterosphere. Homosphere का अगर बात करो तो homosphere क्या है? This is uniform mix of gases, मतलब जितना भी गैस है वो सारे एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन जो है उनका उसमें प्रेजेंट है, और पूरी जगह पे इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट. बट व्हेन इट कम्स टू heterosphere में सेपरेट लेयर्स ऑफ गैसेस है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोपोर्शन. होमोस्फेयर अर्थ के 80 किलोमीटर के अराउंड रहता है, वेर एज heterosphere beyond 80 kilometers present है. होमोस्फेयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म है एंड हेट्रोस्फेयर में एटॉमिक फॉर्म है, दैट इज एटॉमिक रिएक्शन रहता है. होमोस्फेयर में देयर इज H2O प्लस डस्ट पार्टिकल्स एंड हेट्रोस्फेयर में वो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही रहते हैं, क्योंकि 16 किलोमीटर लोएस्ट में ही H2O डस्ट पार्टिकल्स मिलता है. Now we'll talk about what are the layers of atmosphere. First is troposphere, फिर stratosphere, mesosphere, thermosphere and then exosphere. Now बात करते हैं एक के बारे में. ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड करता है सी लेवल से लेके 16 किलोमीटर तक नियर द ट्रॉपिक्स एंड 6 किलोमीटर नियर द पोल्स. सो ये अगर अर्थ है, यहाँ पे बनाया हुआ है थिंक, तो यहाँ से 16 किलोमीटर है और यहाँ से 8 किलोमीटर फॉर दी पोल्स है, ऐसा फॉर्मेशन है. It is dependent for weather phenomena. Temperature highest होता है at surface. As height increases, temperature decrease होगा. जितना ये इसका height decrease होगा उतना temperature decrease होगा. Lapse rate is 6.5 degrees Celsius per kilometer. Once एक बार ये stratosphere reach कर गया, it increases due to ozone and ozone absorb करने लगता है UV radiations. So temperature decrease करता है in the troposphere at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer. Next, it contains 75% of all the gases in the atmosphere. The troposphere is the area wherein most of the gases are present, and more than 90% of the H2O and dust particles भी इसी एरिया में हमको देखने को मिलता है. जितने भी weather phenomena है, because H2 and dust particles are the major components of those phenomena, so जितने भी वेदर फेनोमेना इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर कोई भी फेनोमेना वेदर से रिलेटेड नहीं होता है. इसको हम जोन ऑफ टर्बुलेंस भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ टर्बुलेंस, कन्विक्शन या फिर जोन ऑफ मिक्सिंग. एज जो होता है ट्रोपोस्फेयर का, उसको ट्रोपोपॉज बोल रहे हैं, जहां पे मिक्सिंग स्टॉप हो जाता है. नेक्स्ट कम्स स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड करता है ट्रोपोपॉज से लेके 50 किलोमीटर तक. इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इसका सारा लेयर जो है बहुत ही स्ट्रेटिफाइड है. कोई भी वर्टिकल विंड्स, कोई भी नॉन कन्वेक्टिव नेचर, ये नॉन कन्वेक्टिव नेचर का है, कोई भी विंड्स, कोई भी टर्बुलेंस प्रेजेंट नहीं होता है. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द एयरप्लेन्स आर फ्लोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओनली. नेक्स्ट, टेम्परेचर राइज करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन. सो जनरली हम बोलते हैं कि जब भी ट्रोपोस टेम्परेचर डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर में भी सी 90% ऑफ द ओजोन लेयर है, एंड सॉरी देयर इज presence of ozone layer, and that ozone layer it absorbs UV rays. Now because of those UV rays we have
the temperature which is very high in the atmosphere, stratosphere. Conditions बहुत ही extremely dry होते हैं except few rare clouds. कुछ रेयर क्लाउड्स हैं ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जिसको मदर ऑफ पर्ल या फिर नैक्रियस बोला जाता है. द एज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर तो क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेटोपॉज. नेक्स्ट स्टार्ट होता है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर एक्सटेंड करता है फ्रॉम स्ट्रेटोपॉज अप टू 80 किलोमीटर तक जाता है. टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ ऑल्टीट्यूड एंड लोएस्ट हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर नियर 90 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे सारा कॉमन फिनोमेना हो रहा है बिकॉज दी एटमॉस्फेयर जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है. इसका एज इज कॉल्ड एज मीजोपॉज. नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर 80 से लेके 500 टू 700 किलोमीटर तक प्रेजेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ लो नाइट्रोजन लेयर एंड अपर ऑक्सीजन लेयर. टेम्परेचर राइज करता है रैपिडली इन दी थर्मोस्फेयर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी सोलर रेडिएशंस. नाउ यहाँ पे अगेन टेम्परेचर बहुत हाई पॉइंट पे राइज करेगा because there is an absorption of solar radiation, but it is not felt. The reason being there is absence of molecular collision. The molecular collision नहीं होगा तो किसी भी बॉडी पे वो इम्पैक्ट ही नहीं करेगा हीटनेस. नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम ट्रोपोस फ्रॉम द एज ऑफ ट्रोपोपॉज टू वैक्यूम एंड कंटेन करता है एटॉमिक O2, ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन. मैग्नेटोस्फीयर Magnetosphere present होता है in the exosphere. It is composed of on electrons, protons, which is derived from the solar winds and which is trapped in the Earth's magnetic field. ये arranged है दो bands में in 3000 to 15,000 किलोमीटर, जिसको Van Allen radiation belts भी बोलते हैं. Now ionosphere extend करता है between 80 से लेके 650 किलोमीटर तक. दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोलर रेडिएशन which is made up of different layers जैसे कि D, E, F, etc. and reflect back करता है short waves radiations which is coming from the earth and it helps in radio communication. The last is Kármán line. It is the boundary of airspace, जो कि defined at 100 kilometers के बाद से from the sea level. Outer space begin होता है from the Kármán line. Above 100 kilometer air बहुत thin है for any kind of navigations, but spacecrafts जा सकते हैं. And international law में कोई भी limits नहीं define की गई है airspace की, and definition is on the basis of consensus among the different countries. So if you see this layers of atmosphere, जहाँ पे सबसे पहले we'll see this is the earth, फिर यहाँ पे आता है troposphere. This is 0 to 10 miles, and then most of the activities with respect to the atmosphere, that is weathering conditions, यहाँ पर ही present है पूरा troposphere में. So you can see यहाँ पे बारिश, clouds का formation because of dust particles, etc. Next comes stratosphere. Stratosphere का ये है एंगल. दिस इज द लेयर जहाँ पे मोस्टली एयरप्लेन्स एंड ऑल उड़ते हैं. यहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर जिसकी वजह से द टेम्परेचर इज presence of ozone layer जिसकी वजह से the temperature is very high. Temperature is very high here. Next आता है mesosphere. फिर आता है thermosphere. यहाँ इसी एरिया में हम अरोरास देखते हैं because there is this capture of solar winds. And then exosphere, जो कि and from here the Kármán line starts. Thermosphere के बाद. नेक्स्ट अब बात करते हैं इंसोलेशन के ऊपर. इंसोलेशन इट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशंस. सो ये 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है इसको. जब हम बोलते हैं कि जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसोलेशन बोल रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज सन है. नाउ दिस इज
दी अर्थ सर्फेस, इसके रेडिएशंस डायरेक्ट अर्थ के ऊपर फॉल करते हैं. नाउ दिस इज शॉर्टर इन वेवलेंथ. व्हाई? बिकॉज जो भी ये आ रहा है, दिस इज द एटमॉस्फेयर. एंड एटमॉस्फेयर इसको पूरा ट्रांसपेरेंट रहते हैं, एंड ये जो अर्थ सर्फेस पे गिर रहा है इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा. नाउ दिस sun rays which is coming is getting absorbed by the earth's surface. Now after absorption, कुछ देर बाद it will start releasing these uh, absorbed solar radiations. Now ये जो release होता है, this is called as terrestrial radiations released. Now terrestrial radiations released, ये सीधा नहीं जाता है, but it goes in a longer form and it gets absorbed during the process. Now इसलिए इसको हम लोग long wave radiations बोलते हैं. And there are various in the atmosphere, there are various gases which are present which absorbs these radiations and then releases on a, मतलब बाद में धीरे धीरे करके they will start releasing these gases. Now this is why, now this was better in order to keep the atmosphere a bit warm so that during night it is not very cold. But because the atmospheric layers, the width of the atmospheric layers has increased, it is taking a lot of time to release these gases, which is creating greenhouse impact and global warming. So सो दिस इज अर्थ. ये इससे सोलर से रेडिएशन आ रहे हैं. ये रेडिएशन अराउंड 1.92 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट गिरता है. दिस इज सोलर कांस्टेंट. ओनली 0.1 पार्ट ऑफ द 22 बिलियन लाइट जो होता है सन का, दैट रीचेस द अर्थ, एंड देन अर्थ रिलीजेस दीज टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस इन ऑल डायरेक्शन. ओके. So incoming solar radiations को हम insolation बोलते हैं. The amount of insolation which is received by the earth is 2 billionth of the solar energy. Amount of insolation received is 1.92 calories per centimeter square per minute. इसको हम solar constant भी बोलते हैं. Now incoming solar radiations is of shorter wave and absorb होता है in the earth surface when it's remitted as long wave terrestrial radiations. जब भी कोई भी variations है in the solar output, it does not have great impact on the daily weather changes. So there's a possibility कि ये जो solar का output है, it is in a different way falling on the earth surface because earth is इंक्लाइंड और ओपेक इन नेचर. सो हो सकता है कि यहाँ पे होगा ही कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है अर्थ की, बट यहाँ पे कम है. बट दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट दी effect on the daily weather changes on the surface of the earth. So this is insolation. Now कुछ कंपोनेंट्स का बात करते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है which is shorter in wavelength. This radiation, it is absorbed by the Earth's surface and then is remitted as a long wave radiation, which is then absorbed by certain gases which are present in the atmosphere. Now, since at the time when the Earth's radiations is coming, it is transparent to isolation due to its shorter wavelength, but it is opaque to the terrestrial radiations because of its longer wavelength. So the warming of Earth's atmosphere due to absorption of the territorial radiation, it is called as greenhouse effect. The gases which are responsible is called as greenhouse gases, जैसे कि CO2, CH4, methane. This is generated mainly due to rice in the rice fields. जो भी उसके बच जाते हैं after the cutting of the rice, जो भी straws kind of things are left. Then when it is being burned, this releases methane and it results in the greenhouse gas. Nitrous oxide, agricultural waste से hydrofluorocarbon, chlorofluorocarbon, and then there is sulfur hexafluoride. Now all because the order of consumption is starting from, मतलब CO2 सबसे कम absorb करते हैं, then CH4, then N2O, ऐसे absorption है. However,
because the proportion of CO2 is very high in the atmosphere, it results as it is very renowned as a greenhouse gas. नेक्स्ट आता है नॉर्मल लैब स्टेट. नाउ अर्थ जो है एब्जॉर्ब करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड देन इट एमिट्स द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. इसीलिए दिस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हीट फॉर द एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर डिक्रीज करेगा विथ हाइट, with increase in the height, and this will be at the rate of 6.5 degree kilometers per kilometer, जिसको हम नॉर्मल लैब्स रेट बोलते हैं. नाउ हीट ट्रांसफर कैसे होता है? देयर आर 4 मैकेनिज्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर. एक होता है रेडिएशन, एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन. एक सिंपल हम लोग बॉइलिंग ऑफ वाटर का अगर थिंग एग्जाम्पल लेके चले, सो इफ सपोज देयर इज दिस हीट विच इज बॉइलिंग, विच इज मेकिंग द यूटेंसिल हीट, और इट इज हीटिंग द यूटेंसिल. सो ये जो पास कर रहा है हीट को, this is called as radiation. Now, जब this utensil is getting hot because of the utensil is getting hot now, because of the utensil, ये जो lower layers of water है, this is getting heated up. It is called as conduction. मतलब there is transfer of molecular items in touch with each other when they come in contact with each other. Next आता है, then now when this conduction, when this boiling water goes up in the vertical direction because of the heat, इसको हम convection बोलते हैं. And then when it reaches the top, फिर वो अब horizontal lines में जाना शुरू करेगा. That is called as advection. So radiation involved करता है transfer of heat in the form of radiant energy, and the incoming solar energy is in the form of solar radiations, electromagnetic radiations. So transfer of heat करते हैं from in the form of radiant energy. Next, conduction. Conduction is the flow of energy from warmer to the cooler body. It involves transfer of heat through molecular activity at the zone of contact. ये अकर करता है at the zone of contact between troposphere and Earth's surface. Convection हो गया. Convection is जब transfer होता है heat from by vertical movement of mass in convection. और advection is horizontal movement of mass. Planetary winds and ocean currents example है of advection. Next, कौन कौन से ऐसे factors है जो insolation को affect करते हैं? Now, if we see this diagram, so ये देखो, ये sun है, इससे there is this light radiations which is coming in and it is falling on the earth's surface. Now earth's surface absorb करके कुछ release करता है. Now we will see this diagrams later. बाकी कंसेप्ट भी समझ लेते हैं. तो कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है इंसुलेशन को? तो पहला इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ इफ यू वांट टू सी हाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंपैक्टिंग, सो विल सी दिस डायग्राम. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, नाउ इंसुलेशन जो है, इट इज डायरेक्टली फॉलिंग, सन इज फॉलिंग इट्स सन रेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, बट जब ये लार्जर सरफेस पे फॉल करेगा, सो इट विल बी इंक्लाइंड, इट विल नॉट फॉल डायरेक्टली. तो जो टेम्परेचर का इंटेंसिटी है दैट विल रिड्यूस अ बिट. So that is what it says, that that decides intensity of sunlight. How? On a particular surface. जैसे कि कोई भी region है which is near the tropical, it receives vertical sun rays which causes insolation to be concentrated over smaller area. अगर बहुत ही smaller area पे, यहाँ पर अगर देखो बहुत smaller area पे fall करेगा, then temperature एंड पोलर रीजन यहाँ पे ऑब्लिक सनरेज फॉल करते हैं, जिससे लो इंटेंसिटी बनता है. नाउ लेंथ ऑफ द डे पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, जितना ज्यादा दिन होगा उतना हायर द इंसोलेशन व्हिच इज रिसीव्ड ऑन द सरफेस. Transparency of the atmosphere. Now, since we know that whenever these short wavelength radiations are falling on the Earth's surface, the atmosphere is very clean. It is transparent. So factors जैसे cloud cover, dust particles, it reduces the transparency and reduces the insolation received. So that is one of the reasons. And the other is rotation of the earth on its axis.
That is also one of the factor which influence the insulation. Next is heat budget. हीट बजट क्या होता है? नाउ ग्लोबल स्केल में अर्थ री-रेडिएट करता है जितना हीट उसने स्पेस से एब्सॉर्ब किया. जो भी सन ने उसको हीट दिया, it has to go back to the space or the sun again or to the space again, so that there is a moderate temperature or the balanced temperature which is there on the earth. यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. The gains and losses in the heat by way of incoming and outgoing radiations, उसको हम heat budget बोलते हैं. जब incoming आ रहा है, that is solar radiations, and when it is radiating it back, it is called as terrestrial radiations. Now एक example लेते हैं. For example, there is 100 points of heat which has fallen on the Earth's surface. Now in that, 65% of the heat will be absorbed, but 35% will be reflected back by the clouds itself. Now, अब वो 65 जो absorb होता है, उसमें से there is a bifurcation, जहां पर 51% is going to come on the Earth's surface, but Earth's surface से जब वो तक आ रहा होगा, during that time only the atmosphere is going to absorb around 14% of the solar radiations. Now 51% जो surface पे fall करता है, उसमें से 17% is going to be reflected back to the space and 34% is going to be absorbed by the Earth's surface or the atmosphere. So ये था 65%. 35% जो रिफ्लेक्ट बैक होता है, उसमें से 27% क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, 2% सरफेस रिफ्लेक्ट बैक करता है, एंड 6% स्कैटरिंग हो गए रेडिएट हो जाता है. जितना भी रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, उसको हम बोलते हैं एल्बिडो. एंड दिस इज वाई अर्थ जो है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है, ना नीदर वार्म नॉर कूल्स डाउन डिस्पाइट ऑफ देयर इज ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट ऑन अ रेगुलर basis. Albedo हमने पढ़ा that it's a ratio between incoming and the reflected amount of radiations. Average albedo कितना है? Around 35%. क्योंकि देखो 35% of the पूरा reflect back हो जाता है, whereas 65% absorb होता है. Albedo को हम reflection coefficient भी बोलते हैं. Now, so it depends on the surface कि वो किस पे fall कर रहा है, जिस पे reflection depend करेगा. So अगर there is a surface which is very dark in nature, it will easily absorb those radiations coming in. But if the surface is very white, for example, if there is fresh snow or if there is clouds, it will reflect back those radiations coming from the sun. So sun से radiations आ रहे हैं, radiations ये cloud है, so in the atmosphere only some of the radiations are reflected back, so clouds reflect back कर देगा, ये albedo हो गया. Now some of the radiations which will come in will be diffused radiations. कुछ radiations, there are some kind of panels which are installed on the Earth's surface, वो receive करेंगे. Now some are absorbed in the atmosphere, some are scattered in the atmosphere, some are reflected back, जिसको हम albedo बोलते हैं. So the Earth's energy budget describe करता है various kinds and amounts of energy that enter and leave the Earth system. It includes both radiative components, that is light and heat, which measure होता है by Ceres, and other components जैसे कि conduction, convection and evaporation. On an average, over long term, एक balance होता है at the top of the atmosphere, and the amount of energy जो आ रहा है is the same as the amount of energy which is going back or from emission of infrared radiations. So if you see, there is incoming radiations of 340.4, जिसमें से 77 is reflected back by the clouds and atmosphere. 22.9 reflect back होता है by the surface. 77 absorb कर लिया Earth surface ने, by atmosphere, sorry, atmosphere ने absorb कर लिया, and then the remaining is absorbed by the Earth's surface. Now, when this is emitted, ये emitted होने के बाद, now some of the gases are absorbed by the atmosphere, greenhouse gases. Some are emitted by the clouds. Some are emitted by the atmosphere, और atomic window कुछ है.
Total outgoing is 239.9. थर्मल कंडक्शन, चेंज ऑफ स्टेट, तो ये सारा मिला के जितना भी आता है सारा के सारा वापस अर्थ सरफेस पे रेडिएशंस वापस चला जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट the Earth's surface, albedo, greenhouse gases, the structure of atmosphere. Now we'll start with temperature. So temperature का बात करते हैं. Temperature is the degree of hotness and coldness of a body. It is measured using thermometer and इसका unit is degree Celsius या फिर Kelvin. Now, mean daily temperature is the sum of the temperature for 20 hours divided by 24 hours. Diurnal range of temperature is daily minimum, daily maximum minus daily minimum. So, diurnal range हम निकाल सकते हैं. Mean monthly temperature is mean daily temperature for 30 days divided by 30 days. July May it will be highest. January May the temperature will be lowest. Mean monthly temperature का बात कर रहे हैं. Now, एनुअल रेंज क्या होता है? मीन मंथली मैक्सिमम माइनस मीन मंथली मिनिमम. Places which has recorded the highest temperature is Al Azia, which is in Libya, which recorded 58 degrees centigrade. And but officially, Death Valley in USA has recorded the highest one. And lowest record हुआ है Vostok Station में, which is there in Vostok Station in Antarctica, which has recorded minus 89 degree Celsius. ना कौन से फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को इम्पैक्ट करेंगे? पहला तो इंसोलेशन हो गया. इंसोलेशन हमने बोला कि किस एंगल पे अर्थ का रेडिएशन रिसीव कर रहा है. इनकमिंग सोलर रेडिएशन. सो जितना ज्यादा इंसोलेशन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप रेडिएशन रिसीव करोगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर करेगा. ना किस पे डिपेंड करता है? एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, एक लेंथ ऑफ द डे के ऊपर, एंड थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर के ऊपर. ना दो इंसोलेशन इक्वेटर जो है बहुत हायर एंगल पर इंसोलेशन रिसीव करता है, बट हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वेटर पे नहीं होता बिकॉज देर इज प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स एंड that is maintaining a moderate temperature at the equators. Next is albedo. Albedo कैसे अफेक्ट करता है? जितना ज्यादा albedo होगा, जितना आप ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर दोगे उसको रेडिएशंस को, उतना आपका टेम्परेचर कम रहेगा एट द सरफेस. नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड. जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड उतना कम temperature. It reduces at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer, which is the normal lapse rate. Now, अगर कोई भी place near the sea level है that records higher temperature than the places which are at higher elevation. Next, the nature of the surface. Surface experience करता है different temperature डिपेंडिंग अपॉन कि उसका स्पेसिफिक हीट क्या है. जैसे लैंड का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, ड्यूरिंग द समर्स इट विल बी हीटेड very easily, and during winters बहुत early cool down हो जाता है. But in comparison to the ocean beds, it takes time to cool down and it takes time to heat up as well. So the nature of surface, the specific heat present, it also defines how the absorption or how the factors of temperature will be dependent. Next है continentality. आप कितना दूर हो सी से. लोकेशंस जो कि एकदम इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पे हैं, वहां पे हायर टेम्परेचर होगा, बट जो कोस्टल लोकेशंस होते हैं वहां पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है. जैसे दिल्ली का बहुत हॉटर समर होता है एंड कोल्डर होता है देन मुंबई. Now, the distribution of continents also impacts the temperature. The question is how. As we know, in the northern hemisphere of the Earth's surface, we have more proportion of land than the oceans, and thus it experiences higher range of temperature than the southern hemisphere. Whereas water surface ज़्यादा है in the southern hemisphere. Winds, air masses, ocean currents help करते हैं in the transportation of heat from upper region to the lower region and help करते हैं to maintain a global temperature.
Now, the places which comes under the influence of warm air, they experience higher temperature on the coastal areas, and places अगर कभी भी there is a flowing of warm ocean currents, the coastal areas through which it flows, it records the higher temperature. Now we'll talk about how the temperature is distributed. So the line which is joining the places with the equal temperature is called as isotherms. The value of isotherm that generally decreases from the equator. So if the value of at equator is 30 degree, if we go towards the northern hemisphere, it is going to decrease from 20 to 10 to 5 to 0. Similarly, at the lower southern area as well, it is going to decrease. And it is highest at the equator. Isotherms move northward ज़्यादा करते हैं between January and July, and southward move karte hain during July to January. Because in the northern hemisphere, during January to July, we have summers, whereas between July to January, we have winters kind of environment or temperature. But southern hemisphere mein, it's the opposite. So southern hemisphere mein, from July to January, we have summers, and then January say June tak there is winters. So the shifting of isotherms is more pronounced in the northern hemisphere than over the southern hemisphere. Now the question is why? Because southern hemisphere में बहुत ज़्यादा oceans available है. Now as we know that the there is specific heat concept जहाँ पर land की specific heat बहुत ज़्यादा है, that during the summers it will be heated very quickly, whereas sea level or the oceans का specific heat बहुत कम है. Now because the oceans will not be heated that faster, it will try to maintain a moderate temperature. Now due to this phenomena, the isotherms, they don't move very pronouncedly in the southern hemisphere, but it moves very pronouncedly in the northern hemisphere because there are not much oceans to maintain the temperature. Isotherms जो northern hemisphere में ये shift करते हैं with a greater extent than compared to the other isotherms in the southern hemisphere. Now there's a concept of bending of isotherms. So जब isotherms poleward कर रहे हैं in January, sorry, when isotherms they move in the January, they bend poleward over the oceans, and the isotherms they bend equatorward over the oceans in July. The range of temperature between different regions increases as we have more equator to poles. इसका phenomena एक बार समझते हैं. How does it work? So if you see the isothermal lines here, now this is the equator line here, वहां पर. Now during January, ये January का time का है. If you see how equator has shifted a lot, इतना ज्यादा bend हो गया यहाँ पर, and 5 degrees, 10 degree, 15, 20, 25. So it has shifted a lot, right? तो ये सारे isotherms है. And southern hemisphere में there are moderates, ज्यादा changes नहीं आ रहे. But here it has changed a lot.
So this is a better diagram to understand. So ये distribution दिखा रहा है during the month of January. Now in this time यहाँ पर क्या होता है, cold होता है, यहाँ पे there is heat. Now this is the normal equator line, right? Now इसके ऊपर आप देखो, normal है, बहुत शिफ्ट हुआ, उससे ज्यादा शिफ्ट हो गया, और ज्यादा शिफ्ट हो गया. So see the how the gap, so it is impacting due to, क्यों इतना गैप्स आ रहा है? Because there is not much of ocean to have a moderate temperature. Whereas जब हम बात करें southern hemisphere में, southern hemisphere में at this time is summers, but यहाँ पर बहुत ज्यादा changes नहीं हो रहे हैं isothermal lines में. ओके, अब बात करते हैं, अगर मान लो जब जुलाई का मंथ है, जुलाई के मंथ में अगेन इन द सदर्न हेमिस्फेयर इट विल बी नॉर्मल ओनली. इक्वेटर बहुत ज्यादा मूव करेगा जुलाई में, दिसंबर इट्स द कोल्ड टाइम. नाउ हमको ये समझना था कि हाउ आइसोथर्म्स आर बेंडिंग पोलवर्ड्स ओवर द ओशन इन द जनवरी. नाउ ये जनवरी का अगर सीन देखे, सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स, इट इज बेंडिंग पोलवर्ड्स, राइट? ये बोल रहा है that isotherms bends poleward over the oceans in January. So if you ये नीचे, right? यहाँ से नीचे, how it is bending? It is bending polewards. ये नीचे, नीचे, नीचे. So these isotherms are, they are bending polewards. अगर हम बात करें जुलाई में, so in the month of July it says it bends towards equatorward over the oceans. So it is bending equatorwards. ठीक है, स्टेटमेंट याद रखिए, मैं समझ आ रहा हूँ. और अच्छा है. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर इन्वर्जन. टेम्परेचर इन्वर्जन बोलता है नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड, बट देयर कैन बी अ alternate scenario as well जहां पर विद द इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर विल राइज. ठीक है, दिस इज द डायग्राम विच वी हैव टू मेक अगर क्वेश्चन आता है. सो इफ यू सी, इवन वी हैव सीन इन द स्ट्रेटोस्फेयर एज वेल, यहाँ पर टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है बट ऊपर जाते इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर. सो एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं. एंड अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर रिवर्सल हो सकता है, सो दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड, एंड इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं. ओवर द पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल होता है थ्रू आउट द ईयर, अगेन मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. कितने टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन होते हैं? 4. रेडिएशन, एयर ड्रेनेज, एडवेक्शन एंड फ्रॉस्टिंग. रेडिएशन इन्वर्जन क्या होता है? So it's a type of temperature inversion which is experienced in the plain areas with continentality effect. वैसे कौन सी कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से इन्वर्जन होगा? पहला तो अगर मान लो बहुत ज्यादा बड़ी लंबी विंटर नाइट है, so if there is long winter night, if there is calm and windless conditions, if there is clear and cloud sky, there is loss of radiation by the land surface during night time, which causes land to cool down. Air is just above the surface, also cools down due to contact. This colder air is overlaid by the warmer upper air, जो कि absorb heat करके रखा है from the radiation loss, and temperature increase करता है with increasing altitude. So ये है radiation inversion. So if you see how radiation inversion happens, so
रेडिएशन इन्वर्जन का ये एक एग्जांपल है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नीचे वार्म एयर होता है, फिर उसके ऊपर कुछ कूलर एयर होते हैं, एंड देन उसके ऊपर और कोल्ड एयर होता है, बिकॉज as the altitude increases, the temperature decreases. But there's a possibility that due to some kind of smog or anything, there is this cooler air, and then it is getting back to the atmosphere. ये उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट? दिस इज टेम्परेचर इन्वर्जन, कि पहले कूलर एयर है, फिर उसके ऊपर वार्म एयर है, देन विच इज अ इनवर्स एयर, विच इज नॉट feasible. So this is what it says, that experienced in the प्लेन एरियाज जिसमें कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट होता है। कब होगा? अगर मान लो बहुत लंबी रात थी, विंटर नाइट थी, तो व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल देयर इज अ लैंड, लैंड पूरे दिन भर अर्थ के सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, हीट अब्सॉर्ब करता है, एंड एट राइट इट रिलीजेस। अगर मान लो बहुत ज्यादा रात को ठंड है, बहुत ज्यादा, सो जो बहुत ज्यादा कूलर विंड्स अपने ये सारे के सारे रिलीज कर देगा, एंड द एटमोस्फेयर विल बी वेरी कूल। बट जो हमारा एटमोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस अब्सॉर्प्शन है, फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं रिलीज किया या बहुत धीरे धीरे रिलीज करा है, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ थिक लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, तो दिस is creating this inversion layer. Plus अगर मान लो there is calm and windless conditions, then clear and cloudless sky है, तब अगर मान लो रेडिएशन लॉस हो गए बाय द लैंड सर्फेस ड्यूरिंग राइट टाइम, तो लैंड बहुत ज्यादा कूल डाउन हो गया। नेक्स्ट इज एयर जस्ट अबव द सर्फेस ऑल्सो कूल डाउन ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द लैंड। ये कोल्डर एयर इन द ओवरले is colder layer is overlaid. The colder air is overlaid by the warmer upper air, and which has absorbed the heat from the radiation loss, and it is still in the atmosphere, which has not yet released the heat. Therefore, temperature increase होता है with altitude, creating a temperature inversion. Next आता है air drainage. ना ये मोस्टली माउंटेन्स एंड हिल टॉप्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पे देयर विल बी रैपिड डिक्रीज इन दी टेम्परेचर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाउ वैली साइड्स जो होते हैं एंड फ्लोर, ये बहुत ज्यादा वार्मर रहते हैं, बिकॉज रेडिएशंस एक्सचेंज बिटवीन द वैली साइड्स, सनलाइट उतना ज्यादा वैली एरियाज में नहीं आ पाता है, सो दैट विल बी अ बिट कूलर। कूलर एंड डेंसर एयर फ्रॉम द हिल टॉप विल स्टार्ट, बट अगर टॉप हम लोग बात करें, हिल टॉप जो होता है, दैट इज रिसीविंग द सनलाइट during the night, it will release everything, and it will be very cold environment. Now वो जो cold और denser air है hilltop से, because of gravity, it will start to drain, sink to the valley. Now वो जो warmer layer after some time in the valley, it will rest over the cooler air, because cooler air is more denser, it will go beneath, and then again it is a scene of temperature inversion. You can see a diagram for this. Sierra, ये हिली माउंटेन्स है, ये वैली है, ये रहा हिली माउंटेन्स, ये वैली है, यहाँ पे देयर इज दिस वार्मर एयर, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। Now what will happen is during the night, this cold air it drains here because of the gravity, and now this warmer layer will be upsides, and इसके नीचे colder layers आ जाएंगे। Now this will create a scene of inversion. So light winds under the high pressure allows the valley to cool much more than the high terrain. So ये हो गया हमारा हाई एयर ड्रेनेज। नेक्स्ट आता है एडवेक्शन इन्वर्शन। ये कब होगा? व्हेन देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वार्म एयर पास ओवर द कोल्ड सरफेस एरिया और स्नो कवर्ड सरफेस। ये टेम्परेचर इन्वर्शन क्रिएट करेगा। कॉमनली हम इसको ऑब्जर्व करते ओवर द ओशंस ऑफ टेम्परेट रीजन्स। So it produced a thick layer of warm air which passes over the cold surface. Next comes frontal inversion. Frontal inversion cause होता है due to the front caused due to the frontal conversion of air mass. This is along the fronts. The warm air is forced upward from the ground by undercutting of cold air, जिसकी वजह से temperature inversion create हो जाता है. See how it happens. So there is this cold air which is coming in. Now there is यहाँ पे warm air. It will force it to move upward. तो ऊपर सारा warm air हो जाएगा and नीचे it will be cold air. The frontal inversion is strongest behind the advancing frontal boundary as much as 100 miles.
So this is all about the kind of inversions. Now significance क्या है temperature inversion का? Significance में सबसे पहला is that temperature inversion reduce करता है wind activity को and prevent करता है dispersal of pollutants. So it reduces the wind activity and dispersal of pollutants. Prevent करता है convection by creating stability in the environment, atmosphere, and hence prevent करता है precipitation. Now during temperature inversion, जो cold air है nearer to the surface condense हो जाता है and results in the formation of fog. ये fog reduce करता है visibility and transportation and ocean navigation में बहुत दिक्कत करता है. So पहले तो it creates stability, prevents convection by creating stability and hence prevent करता है precipitation को भी. But इसमें there is a problem in the transportation and navigation because of the fog. Now जब fog react करता है with the smoke या फिर other pollutants, it will create into a smog which is very hazardous and causes health issues जैसे कि winters में in Delhi it happens. Temperature inversion affect करता है settlement pattern in the mountainous region ताकि because most of the people in the mountainous region they stay in the mid area, not on the hilltop and not in the valleys. Slopes are preferred and than the valley slopes of agriculture for agriculture and settlement, just a hill station of Himalayas, apple orchards of Himachal and coffee plantations. तो ये सारा था कहानी किसका? टेम्परेचर का. नाउ विल स्टार्ट विथ प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? जब देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब देयर इज अ फोर्स कमिंग ऑन द सरफेस. एवरेज प्रेशर इज 1013 MB. Now force experienced per unit area is pressure. Atmospheric pressure एक pressure है जो कि exert करता है by the atmosphere on the surface. Average is 1013 MB and the barometer is the instrument which is used to measure the atmospheric pressure of the atmospheric pressure. आइसोबार एक लाइन है जो कनेक्ट करता है प्लेसेस को विद यूनिफॉर्म प्रेशर. कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेशर को? पहला तो फैक्टर है ऑल्टीट्यूड. एज वी नो, जैसे जैसे ना जब भी फैक्टर्स को हम लोग बात करेंगे हमेशा वी हैव टू थिंक अबाउट द वॉल्यूम. नाउ इफ सपोज देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, द और द एयर व्हिच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इट विल स्टार्ट टू एक्सपैंड. बहुत दूर होना शुरू होगा. सो इट विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. सो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा प्रेशर वहां का कम होने लगेगा. सो प्रेशर ऑफ एयर एट द ग्राउंड लेवल बहुत हायर रहता है. क्यों? यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है एंड टेम्परेचर ज्यादा है दैन दी अपर पार्ट. नाउ व्हेन एयर राइज करता है थ्रू कन्वेक्शन उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा बट प्रेशर डिक्रीज होगा. ऊपर जाते जाते वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा. इट विल स्टार्ट टू एक्सपैंड बिकॉज दी it will start. So altitude is one of the factor which is impacting the pressure. Pressure of air at ground level बहुत higher होता है than that of air at higher altitude. And जब air rise करेगा through convection, its volume increases but pressure decrease होगा. जब air sink करता है through subsidence, volume decrease होता है but pressure increase होने लगेगा. Now temperature is the another factor. Now whenever we are thinking of how it is going to impact the pressure, we'll have to think of that how the volume is getting impacted. तो जब भी गर्म होता है air, तो it expands and जैसे जैसे वो expand करेगा, it spreads over a larger area. Now because the volume is increasing, the pressure will decline. Now when air is cooled, it contracts, causing decrease in the pressure. Now, rotation of Earth is also impacting the pressure. कैसे? The rotation of Earth, it causes the air at the poles to be thrown away towards the equator. तो जब Earth का axis अपने axis पे घूम रहा होता है, so because of the centrifugal force, the air which is present at the poles is thrown away towards the equator. Now, air from the polar region, जैसे जैसे वो throw away होता है, it occupies a larger area, which causes a drop in the pressure at the polar areas and around the subpolar areas as well. So this is the diagram how pressure is impacted. So we'll just think of कि पहले तो ये एक Earth का 0 degree equator है. Now यहाँ पे the Earth is absorbing the heat. Now
because of the so much of heat, the air starts to move upwards. Now air rises upwards due to convection. Now जैसे ये convection के साथ ऊपर जाएगा, so it will reach a top जहां से अब वो ऊपर नहीं जा सकता. Now it will start to go towards horizontally. इसको हम क्या बोले थे? कन्वेक्शन के बाद एक और आता है ना टर्म जहां पे वो, ठीक है, इट विल मूव टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. नाउ जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, सो दिस विल स्टार्ट टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एंड नाउ पोलर रीजन का बात करते हैं. नाउ ये तो हो गया 30-30 डिग्री पे, ये दोनों अब it will go towards the 30 degree north and south. The air will go. Now the density will start to rise because यहाँ पे बहुत cold हो चुका है air. Now because the density increases, it will again fall on the earth's surface, leading to decrease in the pressure. So इसीलिए जैसे ही altitude decrease हो रहा है, pressure यहाँ पर increase हो गया और नीचे आएगा, dense होता जाएगा, pressure बढ़ने लगेगा. Similarly, it happens at 30 degree south as well. But अब इक्वेटर का बात करते हैं. तो जब इक्वेटर पे है तो यहाँ पर देर इज अ शिफ्ट इन दी winds. It is moving towards 60 degree north and south because of the centrifugal force which is created at the poles. Now जब ये जा रहा है, so this is coming here, right? अब ये डेंसिटी की वजह से it subsided, ये air subside हुआ दोनों तरफ से. Now once the air subsided, it will again start to move in the horizontal directions. Now because of this and this will again go upwards. Air will there due to convection pressure, it will again go upwards. Now ये जैसे ही ऊपर जाएगा, it will meet the other parts and it will create a formation of pressure belts. Now ये pressure belts हर एक form में create होता जाता है. So अगर इसका हम लोग पढ़े कैसे है, so temperature we'll have to check the volume of expanding, ये तो पढ़ लिया हमने. So यहाँ पे अगर देखते हैं, so this is equator belt, right? This is 0 degree. 0 डिग्री, ये इक्वेटर बेल्ट पे हाईएस्ट प्रेशर है. और जैसे ही यहाँ पे हीट की वजह से कन्वेक्शन क्रिएट हुआ, एयर विल स्टार्ट मूविंग. नाउ व्हेन इट मूव्स, इट विल रीच अ लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, और जो भी लेयर है जहां तक इट विल गो, एंड देन इट विल स्टार्ट टू मूव हॉरिजॉन्टली. नाउ वंस इट हैज मूव्ड हॉरिजॉन्टली, नाउ यहाँ पर ये पोलर रीजन्स पे देयर इज अ विंड व्हिच इज कमिंग डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाउ दिस विंड हैज कम डाउनवर्ड्स. नाउ बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो चुका है, द एयर विल स्टार्ट सबसाइडिंग. नाउ सबसाइड करेगा जैसे एयर, द प्रेशर विल इंक्रीज. नाउ till the time it reaches the earth's surface, again it will start to move horizontally. Now ये जो layer आ रही है और ये वाली layer, this will collide and it will again create a pressure and convection. यहाँ पर air will start to move towards the surface and then again it will release in the horizontal direction. So the same process happens in the southern hemisphere as well. This is subtropical high, this is temperate zone. Temperature यहाँ पे लो होगा बहुत. दिस इज पोलर हाई. बेल्ट का बात कर रहे हैं, यहाँ पे लो बेल्ट, हाई बेल्ट, लो बेल्ट, हाई बेल्ट. लो हाई और सिमिलर होता है सदर्न हेमिस्फेयर के लिए. ये जो विंड्स हम सब ट्रॉपिकल रीजन से देख रहे हैं, जैसे ट्रेड विंड्स. टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल इज नॉर्दर्न वेस्टर्लीज एंड सदर्न वेस्टर्लीज, एंड पोलर इज ईस्टर्लीज होता है जो पोलर से टेम्परेट के बीच में जा रहा है. सो अलॉटमेंट कैसे हो रहा है प्रेशर बेल्ट्स? द हाई टेम्परेचर जो इक्वेटर पे होता है, ये कॉज करता है एक्सपेंशन ऑफ एयर. जो इक्वेटर पे देयर इज अ टेम्परेचर which causes expansion, जिससे there is a low pressure which is a low pressure belt is created. It develops a low pressure belt जिसको हम इक्वेटोरियल लो बोलते हैं. ना जैसे जैसे एयर राइज करेगा ऊपर थ्रू कन्वेक्शन, स्प्रेड होता है एज इट रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड मूव करता है टुवर्ड्स द पोल्स. Now this air converging towards the poles increase, इसका density increase होने लगता है and it begins to sink because density बहुत ज्यादा हो गया. Now it will not move forward, it will sink through subsistence at 30 degree north and 30 degree south, जिसकी वजह से again there will be high pressure belt. अब यहाँ पे देखो ये ऊपर जाके अब सिंक कर रहा है, तो नीचे जब बारिश सबसाइड करेगा तो देयर बी
high pressure belts will be created, and इस एरिया को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई रीजन. तो इक्वेटर से मूव करेगा टुवर्ड्स द पोल्स, एंड पोल्स की तरफ जब जा रहा है तो इट विल reach a higher density and it will subside. Now it will subside at 30 degree north and south. So इसलिए सब ट्रॉपिकल बेल्ट होते हैं यहाँ पर हाइयो बेल्ट क्रिएट करते हैं. Now some of the high pressure air मूव करता है towards the equator and कुछ towards the poles. जो एयर मूव करेगा टुवर्ड्स इक्वेटर रिप्लेस करता है एयर राइजिंग द completing a circular cellular circulation. नाउ लो टेम्परेचर जो पोल्स पे है उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा एयर का, एंड देयर बी डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट. एयर को आप एक्सपैंड कर रहे हो, एयर दूर जा रहा है, सो इट विल क्रिएट हाई प्रेशर बेल्ट्स. सो इसलिए पोलर एरियाज में देयर बी हाई प्रेशर बेल्ट्स. नाउ the air which is blowing away from the poles due to the rotation, it is spread out to a greater space, and the pressure hota hai, it will start to fall, leading to development of low pressure belts at the temperate zone. टेम्परेट पोलर लो या फिर सब पोलर लो क्रिएट होता है. नाउ एयर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मूव टुवर्ड्स द पोल, रीचेस एट 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एंड कन्वर्जेस विद द एयर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द टेम्परेट लो. This rising air spreads out divergence with some part moving towards subtropic and कुछ poles की तरफ. Air moving towards the subtropics, it converges with the air from the equator and subsides completely from the second circular circulation. जो air move कर रहा है towards the pole in the upper atmosphere subside करता है near the poles, completing the third circulation. Position of the pressure belts shift करता है north and south with apparent movement of sun's pressure belts move. पोजिशन जो होता है प्रेशर बेल्ट का शिफ्ट होता है नॉर्थ एंड साउथ जैसे ही सन का एपरेंट मूवमेंट होगा. प्रेशर मूवमेंट करेगा, बेल्ट्स का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स नॉर्थ अगर समर्स है एंड टुवर्ड्स साउथ अगर विंटर्स है. नाउ हाउ प्रेशर belts or pressure happens in the different सीजन्स. तो अगर बात करते हैं पहले प्रेशर इन जनवरी का, तो जनवरी में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर. Subtropical high pressure belt of the southern hemisphere is found only over the oceans.